Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we have started chapter number 3. I have given you a complete introduction of this chapter, human health, and today I will deliver its first lecture, which is about identification of illnesses. यानी कि जो आप मुख्तलिफ बीमारियां आपके अंदर आ जाती हैं और आप बीमार हो जाते हैं, सो आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी बीमारी होती है और हम कैसे बीमार हो जाते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इट विद एन एक्टिविटी. डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स, असाइन देम द टास्क्स. First group to present some common symptoms of illnesses. Second group will identify the symptoms. Third one to follow the precautions to avoid these symptoms. So my dear students, आपकी टीचर जो है वो आपको 3 different ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगी एंड शो देम गिवन पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी. ठीक है, आपकी टीचर जो है आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगी और पहला ग्रुप जो है वो आएगा और वो किसी भी सिम्टम का इजहार करेगा, जैसे कि या अच्छू अच्छू ऐसे करके, यानी कि आपने कुछ सिम्टम्स जो है वो शो करने हैं लाइक यू आर इल. देन द सेकेंड ग्रुप विल कम एंड आइडेंटिफाई द डिजीजेस. ठीक है, जिस तरह ये मुख्तलिफ डिजीजेस हैं तो यू विल एक्ट लाइक दिस. Either you have flu or fever, तो आपने इस तरीके से एक्ट करना है. Then the second group will, this is how you will present them. The second group will identify the symptoms. आप second group ने आप बताना है कि this is coughing, this is sneezing and this is fever, headache or whatever they are acting. ठीक है, second group ने आके सिर्फ diseases के names बताने हैं. Then the third group will tell how we can prevent और कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं. ठीक है, बाय वेयरिंग अ मास्क, बाय वॉशिंग आवर हैंड्स एंड बाय कवरिंग आवर माउथ व्हेन वी आर स्नीजिंग. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ जर्म्स. ठीक है, आप अपने आप को या दूसरों को जर्म्स से इस तरीके से बचा सकते हैं. सो ग्रुप सी जो है वो ये टास्क करेगा कि वो बताएगा कि कैसे इन बीमारियों से दूसरे लोग जो हैं वो महफूज रह सकते हैं. So my dear students, pause the video and complete this activity. I hope all of you have enjoyed the activity. Now we will move forward towards Islamic perspective. So, and we send down in the Quran such things that have healing and mercy for the believers. So my dear students, कुरान पाक में बहुत सी बीमारियों के लिए शफा है और बहुत सी आयात हैं, कुरानी आयात हैं जिनके अंदर शफा मौजूद है. So my dear students, we will move forward today on today's lesson. Today is identification of illnesses. हम मुख्तलिफ जो diseases हैं, illnesses हैं, उनके बारे में उनको identify करेंगे. So my dear students, by the end of today's lecture, all the students will be able to observe and recognize some common symptoms of illnesses like fever, coughing and influenza. ठीक है, इनके को हम symptoms देखेंगे कि जब हमें coughing होती है तो क्या होता है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है. स्नीजिंग जब वो फ्लू हो जाता है तो छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, सर में दर्द होता है, वाटरी आइज होती हैं. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सम प्री रीडिंग क्वेश्चंस, क्विकली रिफ्रेश योर नॉलेज. हैव यू एवर बीन सफर्ड फ्रॉम फीवर, कफ और फ्लू? नरेट योर एक्सपीरियंस, शेयर अबाउट योर रिकवरी एज वेल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन आप लोगों ने अपना कोई भी पुराना, आप जब बीमार हुए हों तो आपको कैसा फील होता था, सिम्टम्स क्या थे आपके और आपने कैसे अपने आप को रिकवर किया, आपको जो है वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ. अभी रिसेंटली विंटर्स जस्ट पास्ट, सो आई गॉट इल एंड आई हैव स्वेयर बैक पेन एंड हेडेक एंड आई हैव रनी नोज एंड कफ एंड आई थॉट दैट आई ऑल्सो हैड फीवर. So everyone thought that I had COVID, मुझे कोरोना हो गया शायद, but I did not have corona at that time. मुझे ठंड लग गई थी, I had cold और इस वजह से मेरी रनी नोज थी और वो था. then I didn't get well. So मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे they took me to the hospital and I had to take some antibiotics and cough syrups and then painkillers and then I got better in 5 days. It took me 5 days to get better. So this is my experience. Pause the video and share your experience. Very nice. So my dear students, now I request you all to please open page number 40 in your science 4 books. Very good. Now we will start the reading. Identification of illnesses. Put your fingers where I will read.
Identification of illnesses. The state of being ill can be identified by observing the symptoms. Illness is general disorder of the body or may indicate serious diseases such as early stage cancer, diabetes, TB, etc., but not necessarily. The common symptoms of illness are fever, cough and influenza. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जब आप बीमार होते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स शो होते हैं जिससे आपको पता हो चलता है कि योर बॉडी इज़ नॉट फिट, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू. सो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको इंडिकेट होते हैं. तो आपको कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर या टीबी, और अल्लाह ना करे कि ये किसी को भी हो, लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि यही बीमारियां हों. कॉमन जो बीमारियां हैं जो अक्सर लोगों को हो जाती हैं वो है फीवर, कफ एंड इन्फ्लुएंजा. ये तो अक्सर बच्चों को भी हो जाती हैं, आपको भी हो जाती होंगी सर्दी में खेलकर या पंखे के नीचे पसीने में से जब आप बाहर से भाग कर आते हैं तब भी. सो वी विल डिस्कस दैम इन डिटेल. सो वी विल स्टार्ट विद फीवर. Fever is an increase in normal body temperature that is more than 37 degrees Celsius or 98 Fahrenheit. In general, fevers are nothing to get worried, rather than are helpful to fight with many of the infections. If fever increased up to or more than 39 degrees centigrade or 103 Fahrenheit, one must consult the doctor immediately. So my dear students, जो normal in the human body temperature होता है that is 38 degrees centigrade और 38 Fahrenheit. ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है. वैसे अगर आपका टेम्परेचर इससे हाई हो जाता है तो ये कोई इतनी खतरे की बात नहीं होती. इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी, अगर आपके अंदर कोई इन्फेक्शन आ गई है तो आपकी बॉडी उसके साथ फाइट कर रही है. लेकिन अगर आपका फीवर 39 डिग्री सेंटीग्रेड से या 103 Fahrenheit से ज़्यादा हो जाए तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो आपको मेडिकल एड दें. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कफ, यानी कि खांसी. Sometimes we cough and feel irritation in the throat. If we cough a few times, it is normal, but if it persists for longer, it is due to illness. A runny nose, sore throat, and headache are common symptoms of cough. Swear cough is a symptom of other diseases, so consult a doctor in no time. So my dear students, खांसी आपको गले में इरिटेशन की वजह से, ज़्यादा ज़ोर से बोलने की वजह से भी हो सकती है, ये कांस्टेंट बहुत ज़्यादा देर तक बोलने से भी हो जाती है. जैसे कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू मुझे अक्सर खांसी आ जाती है क्योंकि प्रोलॉन्ग तरीके से अगर आप बोलेंगे तो गले में इरिटेशन हो जाती है. बट इफ़ यू हैव परसिस्टेंट कफिंग, ज़्यादा देर तक आपकी परसिस्ट हो रही है कफ, तो दैट मीन्स इट इज़ एन इलनेस, सो यू मस्ट सी ए डॉक्टर. इसके अलावा कफ की और कौन कौन सी निशानियां होती हैं? आपकी रनी नोज होती है, आपको सोर थ्रोट, गले में दर्द होता है. इसके अलावा आपकी रनी आईज भी होती हैं, हेडेक जैसे सिम्टम्स भी होते हैं. तो अगर आपकी कफ जो है वो बहुत ज़्यादा हो, देर तक प्रोलॉन्ग करे और आपकी ठीक नहीं हो रही तो आपको डॉक्टर को फ़ौरन चेक करवाना चाहिए. हो सकता है ये किसी दूसरी बीमारी की तरफ इंडिकेट कर रही हो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट डिजीज इज इन्फ्लुएंजा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लू. Sometimes we feel fever along with cough and sore throat. These are the symptoms of flu. Flu is caused by a virus named influenza. This virus infects nose, throat, and sometimes lungs. In general, these symptoms appear harmless and vanish in a few days. However, it may indicate some diseases such as COVID-19. Therefore, immediately consult the doctor if the flu persists for more than a week. सो माई डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू माई स्टोरी कि मैं बीमार हो गई थी, मुझे फ्लू था, मुझे रनी नोज थी, सोर थ्रोट था, खांसी बहुत ज़्यादा थी और फीवर भी था. आई हैव स्वेयर हेडेक एंड बैक पेन ऑल्सो. और फीवर मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था तो एवरीबडी थॉट दैट आई हैड कोविड शायद, लेकिन कोविड नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन अगर आपको भी एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाए कि आपको रनी नोज़ है, सोर थ्रोट है और बुखार है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए, सो दैट एवरीबडी, यू एंड एवरीबडी अराउंड यू विल बी सेफ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने फीवर के बारे में भी पढ़ लिया. सो फीवर में आपका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, आपकी जो है बॉडी जो है वो एक करती है एंड अगर आपका फीवर जो है वो 103 से ज़्यादा हो जाए, फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. सो हमने कफ के बारे में भी पढ़ लिया, खांसी होती है बहुत ज़्यादा. फ्लू के बारे में पढ़ा, आपको बुखार होता है, कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, हेडेक होता है. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा. So now is the time for evaluation. So my dear students, quickly answer these questions. What are the symptoms of illnesses?
cough, flu, and fever. What should we do when we have increased fever? We must immediately consult a doctor. Very good. So what type of symptoms flu show? Headache, runny nose, coughing, sore throat, and fever. So these are the symptoms of influenza. Now is the time for practice. For practice, quickly, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So what you need to do is read the flu symptoms in the box below, then write the symptoms in full sentence using simple present tense. So my dear students, here you can see different symptoms are written here, like feel terrible, sore throat, headache, the flu, high temperature, cannot stop shivering, a fever, muscle ache, dry cough, and exhausted. So underneath there are given different डिजीजेस, इलनेसेस लाइक फ्लू. तो फ्लू में कौन कौन से जो हैं वो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, सोर थ्रोट, हेडेक. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फ्लू. अब आपको इनको फुल सेंटेंसेस में लिखना है दैट व्हेन वी हैव फ्लू, वी हैव हेडेक, and we have high temperature, and we also have sore throat. So this is how in sentences you will write down in front of each illness. So here you can see other illnesses. Look at the pictures below and write a sentence of what's the matter with the person. You need to use simple present tense. So यहाँ पे इनको भी मुख्तलिफ जो है वो problems हुई हैं, illnesses हैं. So you have to tell in a simple sentence that what is happening with the person. Let me do the first one for you. This girl is having toothache. यानी कि उसको दांत में दर्द है. Next you will do by yourself by writing the simple sentence. So complete this worksheet and submit it to your teacher, and then we will move forward. Very good. Now we will move forward towards your homework. For homework, you will do project number 1 with the help of your parents. So question number 1 from exercise from section B. So this is your project number 1 given now on page number 40. What you need to do is students need to maintain My Health journal for over a week. A specimen is given below in which 5 habits are given. The students have to add 6th and 7th habit with the help of the teacher or parents. So my dear students, you will write down the date कि आपने किस डेट से अपने आप को चेक करना शुरू किया और किस डेट तक आप अपने आप को चेक करेंगे. For 1 week you will tick all the things that you have done. That do you wash your hands? Do you eat well? Do you sleep well? And then submit your health journal to your teacher and at the end of the week. Then take shower, brush your teeth, and what are the 6 and 7 activities that you do? Wash your hands before and after meals, and number 7, wash your hands when you use toilet, after using toilet. So this is how you will complete this journal for 1 week and then submit it to your teacher. So this is your homework, and then we will move forward towards your wrap-up. For wrap-up, illness is disorder of body or some serious diseases. Illness is identified by some common symptoms like flu, cough, and fever. So my dear students, आज हमने illnesses के बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि कैसे जो है हम बीमार हो जाते हैं, कौन से उनके symptoms होते हैं, और हमने कुछ general diseases पढ़ी जैसे कि cough, fever and flu, और कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. So my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.